me. Now tell me the functions of parenchyma. Ma'am, it stores food and waste material. It stores food or kuch, anything else? Better, better, better. Ninth B, roll number 1. Ninth B, roll number 1. आ जाओ बेटा, जूम से माइक ऑन करो और फिर बताओ. Other functions of parenchyma. Storage of food. Storage of food तो नाइन्थ ए ने बता दिया. Any other function? चलिए बैठिए, आप बैठिए. एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर. नाइन्थ एफ से कहाँ हाथ खड़ा है बेटा? नाइन्थ एफ, यस. पहले जूम से माइक ऑन करो बेटा. हाँ जी, अब बोलो. Ma'am, in leaves, parenchyma contain chlorophyll, which helps in photosynthesis, and in aquatic plants, the parenchyma have air cavities that help them to float. That is absolutely correct. Very good. चलिए अब हम Called parenchyma. Yes, बिल्कुल ठीक है. Parenchyma के functions. Let's see. What are the functions of parenchyma? Last column आपने बनाया था. Functions. So first is storage of food. Main is storage of food. Second is helps in photosynthesis if parenchyma has chloroplasts. And such parenchyma which consists of chloroplast. Everybody, जल्दी से बताओ उनको क्या बोलते हैं? Chlorenchyma. Yes, it is chlorenchyma. बेटा कोलेनकाइमा से कंफ्यूज नहीं करना है. क्लोरोफिल से या क्लोरोप्लास्ट से क्लोरेनकाइमा. क्लोरेनकाइमा. क्लोरोफिल से क्लोरेनकाइमा. Right? Then another is the third one in free floating, not all but free floating aquatic plants. Aquatic means which float on water. Aquatic plants means which live in water. In free floating aquatic plants, parenchyma has air spaces that store air. And because it stores air, जो air store, जिसमें air हो क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है, लाइट वेट हो जाता है. Buoyancy provides buoyancy, and due to which the plant become lightweight and it floats. That's why it floats. And such parenchyma which stores air is called as parenchyma. So one can ask you modifications of parenchyma, that is chlorenchyma and parenchyma. Modifications, 2 marks में क्वेश्चन आ जाता है. Give 2 modifications of parenchyma.
two modifications of parenchyma, and that is chlorenchyma and arenchyma. And one more thing. Beta, identify this structure. Ninth C, roll number 26. Ninth C, roll number 26. Come on, come quickly. देखिए आपका माइक ऑन है. देखिए आवाज टेस्ट करो जरा से. गुड मॉर्निंग. देखो जरा दोबारा से तार निकाल के इसमें डालो जरा. देखो ऑन करो, कुछ करो. हाँ, अब देखो, अब बोलिए से हेलो. हाँ जी, अब आ रही है. से व्हाट आर दे, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? इट इज स्टोमेटा. राइट, बैठो बेटा. इट इज स्टोमेटा present on leaves and green stem. ठीक है जी. नाइन्थ डी, पहले माइक चेक करो बेटा. हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा. हाँ जी, द सेम गर्ल, जिसके दिस गर्ल विथ स्पेक्स. हाँ जी बेटा, आपने मुझे बताना है कि व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर. ये जो दो किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर्स है, इनको हम क्या बोलते हैं? These are guard cells. Guard cells की some speciality. Are guard cells parenchyma, collenchyma, sclerenchyma? क्या है ये? नहीं पता? Anybody know what these guard cells are? हाँ, आप बताइए बेटा. Very good. जोर से बताओ बेटा, मुझे सुना नहीं. These are parenchyma cells. But are they modified कि simple parenchyma? कौन सी मॉडिफिकेशन है? Chlorenchyma. Very good, very good. So guard cells, write down with a star that guard cells of stomata have chloroplasts. And therefore are chlorenchymatous. यहाँ पे इनके क्लोरोप्लास्ट्स है. ये क्या है? These are chloroplasts. Draw diagram also. Without diagram, biology is dead. Draw the diagram. What are these? These are chloroplasts. These are chloroplasts. जल्दी जल्दी से एवरीबडी ड्रॉ डायग्राम. 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन में एक पार्ट आ सकता है. ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द स्टोमेटा. What is special about the guard cells? What is special about guard cells? These are parenchyma cells with chloroplasts. Helps in opening and closing of stomata. लिख लेना, functions भी लिख लेना. Helps in opening and closing of stomata. 10th में पढ़ोगे, but because we are doing guard cells here. And what is the function of stomata from class 6 or class 7? From class 6 you are studying? Yes. Anybody can tell?
जिसके पास माइक है जल्दी से, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। It helps the exchange of gases and in transpiration. Very good. It helps in exchange of gases and loss of water vapors. Sixth class में you must have studied. It helps in gaseous exchange. Right. Then next is parenchyma. Has thickenings at the corners. Diagram you must have drawn yesterday. Parenchyma. Ninth E. Ninth E, roll number 12. Roll number 12, ninth E. पहले ninth E वाले बेटे माइक चेक करेंगे. माइक चेक करो बच्चे. Good morning, ma'am. Morning. हाँ जी बेटा, roll number 12. Can you tell me the functions of parenchyma? Do you remember? नहीं, अभी नहीं याद है. Anybody from ninth E? Anybody else? नाइन्थ ई मैम, किसी बच्चे से पूछे, खड़ा करें. बच्चे आता भी होता है बट दे डोंट. Ma'am, this topic is not done till now. Okay, So okay, that's the reason they don't know the answer. okay, no problem, ma'am. I will tell. So parenchyma, you know, you have drawn. अच्छा, सबने कल डायग्राम बनाया था parenchyma का. Raise your hands if you have. कल डायग्राम क्योंकि बीच में डिस्कनेक्शन हो गया था तब मैं पूछ रही हूँ. तो डायग्राम आपने बनाया है. एक सेक्शन का हाथ खड़ा है. आई थिंक एवरीबडी हैज ड्रॉन. मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि दे हैव थिकनिंग्स एट द कॉर्नर्स. दे हैव थिकनिंग्स. जिसने नहीं बनाया वो बना लो. एट द कॉर्नर्स, नॉट एवरीवेयर. They have thickenings at the corners. Few intercellular spaces you must have written. And these are present. Where they are present? Epidermis मैं बताऊंगी, but फिर भी लिख लो. Present below epidermis of long branches. Long branches of stem. फंक्शन क्या है? इतना आंधी तूफान, ब्रांचेस गिरती है, बट मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस दे रिमेन इंटैक्ट. ठीक है, आई नो नाइन्थ एफ यू बेटर नो, बट अदर स्टूडेंट्स डोंट नो, सो लेट मी टेल. सो this parenchyma provides flexibility to the stem branches. So provides elasticity and flexibility to green stem and long branches. Not woody stem, but green stem when it is soft, tender. So there, woody जब हो जाती है तो parenchyma है. This is the main function of parenchyma. Write down. Next is sclerenchyma. Sclerenchyma, you know, it is dead. This is dead, thick-walled, very less lumen. ये आपने लिखा हुआ है. फंक्शन क्या है? It is the
रिमेंबर दैट। मैंने स्टार डालना है, आपने स्टार डाल के अंडरलाइन भी करना है। इट इज द it is the main mechanic. It provides hardness and stiffness. Yes, बिल्कुल ठीक है, हार्डनेस एंड स्टिफनेस, वेरी गुड बेटा। इट इज द मेन मैकेनिकल टिश्यू। मैकेनिकल मीन्स जो सपोर्ट दे रहा है, राइट, प्रोवाइड्स सपोर्ट। हार्डनेस एंड stiffness. For example, husk of coconut. हस्क पता है ना बेटा, बाजार से हम नारियल लेके आते हैं, उसके ऊपर से हम वो उतारते हैं हस्क, जो कई बार हाथों में भी चुभ जाती है। ठीक है, नॉट हरा नारियल जो पानी वाला, दूसरा नारियल होता है, सूखा नारियल, बिल्कुल सूखा नहीं, जिसके ऊपर हस्क है, कॉयर है। सो हस्क ऑफ कोकोनट। देन हार्ड सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, दालों के, एंड नट्स। नट्स के ऊपर बादाम तोड़ने पड़ते हैं, जो उसका ऊपर का है वो किसका बना हुआ है, दैट इज स्क्लेरन का, और प्लांट के अंदर तो है ही है। तो मेन मैकेनिकल टिश्यू है ये, जो पेड़ को, किसी भी प्लांट को सीधा रखने में हेल्प करता है। मैम इन कॉर्क सेल्स, इन कॉर्क सेल, बेटा कॉर्क में स्क्लेरेन्काइमा नहीं है, इट्स नॉट स्क्लेरेन्काइमा। थिक वॉल्ड सेल जरूर है, बट सुब्रिन की थिकनिंग्स है, स्क्लेरेन्काइमा। बट जाइलम में, अब जाइलम के फाइबर्स करेंगे, फ्लोएम के फाइबर्स करेंगे, दीज आर स्क्लेरेन्काइमा, वी विल डू, अभी अभी हम करते हैं। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स है, यहाँ पे कल कनेक्शन कट गया था, दैट्स व्हाई आई कुडंट टेल यू। रिमेंबर दैट balls are lignified. Lignified means, that is, क्या मतलब है इसका, balls have deposition of hard chemical called as lignin. So I had told you that balls of sclerenchyma are lignified. ये important है, that the walls has deposition, जो thickenings है वो किसकी बनी है, that is lignin, right? The thickenings of sclerenchyma, the thick walls of sclerenchyma are formed of a chemical that is lignin, right? Everybody done? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। लिखो जरा जल्दी से, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बेटा डोंट थिंक कि वी हैव ओनली 3 टाइप ऑफ सेल्स, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। These are the 3 major type of cells, but there are other type of cells also in the plant.
ठीक है स्टूडेंट, जैसे अभी एक बच्चे ने मुझे कहा कि कॉर्क सेल्स क्योंकि थिक वॉल है वो स्क्लेरेंकाइमा के बने हैं, नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, देयर आर अदर टाइप ऑफ, लिखो ऊपर, राइट डाउन इन द कॉपी अबव, जो खाली जगह होती है ना ऊपर को लिखो कि इन एडिशन टू पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा, इन एडिशन टू पेरेंकाइमा, 9th ए बेटा वीडियो ऑन करो। In addition to parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, there are other type of cells also. There are other type of cells also present in the plants. Present in the plants. ठीक है, तो ये नहीं कि थिक वॉल है तो वो स्क्लेरेंकाइमा ही होगा, नहीं, कोई कोई और सेल्स भी हो सकते हैं। थिन वॉल है तो वो बस पेरेंकाइमा होगा, नो, other type of cells are also present. So then we come to complex permanent tissues. दो टाइप के हैं. What are complex permanent tissues? These are the tissue, यहाँ पे लिखिए, write down the definition, the tissue having more than one type of cells. The tissue having more than one type of cells. The tissue having more than one type of cells which collaborate with each other, which collaborate with each other to perform same function. 9th G, I'm talking about the definition of complex permanent tissue. What is complex permanent tissue? Group of different type of cells performing same function. Group of different, जैसे हमने पेरेंकाइमा कोलेनकाइमा किया था, पेरेंकाइमा में सारे सेल्स एक जैसे हैं, but in complex permanent tissue the cells are of different types. The cell, so group of different type of cells performing same function are complex permanent tissue, and it includes vascular tissues. It includes vascular tissues which helps in transport. Vascular का क्या मतलब है? Which is the vascular tissue in our body? The blood. Blood is the vascular tissue in our body which transports substances. Likewise, plants में the vascular tissues means which transport substances. Complex permanent tissues include vascular tissues which transport substances. Xylem, transport. Water, लिखो जरा, water and minerals from root to upper parts of plant. Xylem transport water and minerals from roots to the upper parts of the plant. और साथ ही लिख लो, ये टर्म आपके बुक में नहीं है बट 10th में आ जाती, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ. नथिंग मोर, वाटर प्लस मिनरल्स, water plus minerals is called as sap. Water plus minerals is called as sap. And upward movement is called as ascent. Ascent. Ascent of step. Yes. Upward movement is ascent. तो हम क्या कहते हैं?
that xylem helps in ascent of sap. Xylem helps in ascent of sap. And first go ahead. And second function is xylem provides support to the plant, mechanical support. कैसे? I will tell you. Mechanical support to the plant. Xylem provides mechanical support to the plants. Phloem helps in transport of food. Transport of food in the plant. एक जगह से दूसरी जगह पर. Phloem helps in transport of food. I think due to bad weather, there is some internet problem, but no worries. So xylem, it is formed of tracheids. Write down components of xylem. Write down components of xylem. Tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem fibers. Tracheids, vessels, xylem parenchyma, components of xylem, tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem fibers. These are components of xylem. And next line, write down. Except xylem parenchyma, all the other three components are dead. Except xylem parenchyma. All three components of xylem are thick-walled and dead. Are thick-walled and dead. Tracheids and vessels, they help in transport of water and minerals. Tracheids and vessels helps in. So, which component of xylem helps in ascent of sap? It is tracheids and vessels. Xylem parenchyma helps in storage of food. And xylem fibers provide mechanical support. Tracheids and vessels helps in transport of water and minerals. Means tracheids and vessels helps in ascent of sap. Xylem parenchyma, storage of food, and xylem fibers helps in mechanical support.